हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। तो हमें जो सीरीज स्टार्ट कर ओपीएससी एग्जाम ओडिशा सिविल सर्विस और ओएस एग्जाम लास्ट ईयर दैट इज 2020-21 रो प्रीलिम्स रो जीएस पेपर 1 डिस्कशन हमें ऑलरेडी 17 टा पार्ट रे अराउंड 85 क्वेश्चंस डिस्कस कर सारछु। सो दिस इज द पार्ट 18। तो प्रति पार्ट रे हमें 5 टा लेखा क्वेश्चन को प्रॉपर डिटेल एनालिसिस रे डिस्कस करछु। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 18। ओके, so question number 86. The governing council of Niti Aayog comprises of what? नीति आयोग जानते हो बहुत फेमस बॉडी जोड़ा की लाइक रिप्लेस करथला काको प्लानिंग कमिशन को। सो से कहूछ कि जो नीति आयोग रो सबुठ जो मेन बॉडी दैट इज गवर्निंग काउंसिल, तो सेते के माने मेंबर थांती। सो आंसर एठी बोथ एंड सी ही परियो व्हाई, बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली चेयर करंती काको गवर्निंग काउंसिल को चेयर चेयरपर्सन और से सब चीफ मिनिस्टर भी थांती प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी थांती हला यूटी रो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थांती से माने भी थांती। सो सी ऑप्शन अछि ऑल चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन ए रे अछि प्राइम मिनिस्टर। सो बोथ कैन बी आंसर्स। ओके, सो नीति आयोग तार फुल फॉर्म अछि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग इज चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर and comprises of chief minister of all the states and union territories with legislatures and lieutenant governors of other union territories. The governing council was reconstituted by the notification dated 19 February. Okay, so okay, so Niti Aayog को planning commission को replace करथला after the Modi government came to power. So let's see about little bit about the Niti Aayog. Planning has been in Indian psyche as our leaders came under influence of the socialist claim of erstwhile USSR. तो जानते हो USSR जब गठित हेतला सी 5 years planning method रही से माने एक्चुअली गली प्लान करके चलथले। तो बिकॉज़ जो सेटा लीडर्स थे हमर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, he was pretty much influenced by this planning model 5 years plan. तो तेनो तो प्लानिंग कमिशन से गठन करथिले जोडा कि गोटे एग्जीक्यूटिव बॉडी थिला ना कि लेजिस्लेटिव बॉडी थिला, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नथिला कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नथिला। सो प्लानिंग कमिशन सर्व्ड एज द प्लानिंग vehicle for close to 6 decades with a focus on control and command approach. The government of India constituted the Niti Aayog to replace the planning commission. So 1950 actually planning commission aitla. So this step was taken to what? For better serve the needs and aspirations of the people. An important evolutionary change, Niti Aayog acts as the quintessential platform for the government of India to bring the states to act together in national interest and thereby foster cooperative federalism. Planning Commission was replaced by a new institution, Niti Aayog, on January 1st, 2015. So remember this date, 1st January 2015 रे Planning Commission को replace करथला किए नीति आयोग और emphasis करथला bottom up approach. So basically जो Planning Commission थिला से mainly top down approach चलथला। Basically से माने दिल्ली रे बसी की गोटे तांको ऑफिस से गोटे बनौथले पॉलिसी सेटा को ही पूरा देश फॉलो करथला, जैसे अनुसार से फंडिंग भी दोथले, बट सेटा को बेसिकली चेंज कला नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच माने लाइक इन द ग्रास रूट लेवल जो डेमोक्रेसी अछि हमर लाइक पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस अर्बन लोकल बॉडीज, तो सेमन को नै कि कोन तांकर नीड्स अछि से अनुसार से ऊपर को गोटे प्लान देखि जाय। ओके, दिस इज द नीड और सेटा को बॉटम अप अप्रोच कहउछि एंड नीति आयोग ओनली लाइक गोटे एडवाइजरी बॉडी, एको को फाइनेंशियल लाइक फंडिंग पावर नहीं जोड़ा कि प्लानिंग कमिशन को थिला। ओके, so emphasis on bottom up approach to envisage the vision of maximum governance and minimum government. So minimum government, maximum governance, this is the motto or vision of planning commission, echoing the spirit of cooperative federalism. So Niti Aayog is the premier policy think tank of the government of India, providing directional and policy inputs. Apart from designing strategic and long-term policies and programs for the government of India, Niti Aayog also provides relevant technical advice to the center, states, and union territories. Okay, so this is the administrative model or skeleton of Niti Aayog. The chairperson we have Prime Minister is the chairperson, and vice chairperson to be appointed by the Prime Minister. So currently, Dr. Rajiv Kumar is the vice chairperson of Niti Aayog. Niti Aayog actually good cooperative, corporate, not cooperative, corporate वाले काम करे, है ना? CEO CEO भी अछंती एडी करथिबो, हां, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सो करंटली श्री अमिताभ कांत इज द CEO of Niti Aayog and vice chairperson is के योर डॉक्टर राजीव कुमार.
हैला chairperson सबले प्राइम मिनिस्टर रहबे करंटली नरेंद्र मोदी and governing council is जोड़ा क्वेश्चन पचारला चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स and lieutenant governors of UT. So in that way option C should be actually the answer, not A, but because chairperson है prime minister, so in that way, okay, let's see. So we should go with actually chief minister of all the states and lieutenant governors of UT. Then regional council to address specific regional issues comprising chief ministers and lieutenant governors chaired by prime minister and or his nominee. Ad hoc membership, 2 members in ex officio capacity from leading research institutes on rotational basis. Ex officio membership, maximum 4 from Union Council of Ministers to be nominated by Prime Minister. So ex officio membership को Prime Minister nominate करचोंदी, Vice Chairperson को भी appointment करचोंदी Prime Minister. Then your ad hoc membership जो अच्छोंदी 2 members in ex officio capacity from leading research institutes. तो जो research institutes से ex officio member हिसबे. And चारटा काउं जो Union Minister से के एबे के अच्छोंदी, Defense Minister श्री राजनाथ सिंह, Home Minister श्री अमित शाह, and Finance Minister श्री निर्मला सीतारमण, Agriculture Minister नरेंद्र सिंह तोमर. And CEO appointed by Prime Minister for a fixed tenure in rank of secretary. तो तांको secretary rank था to Government of India currently Sri Amitabh Kant. Special invitees, expert specialist with domain knowledge nominated by Prime Minister. Niti Aayog Hub, okay, Team India Hub acts as interface between states and center. So center and state भितर किए intermediary वाले काम करते Team India Hub. Knowledge and Innovation Hub, KIH, Knowledge and Innovation Hub. It builds the think tank acumen of Niti Aayog. It builds the think tank acumen of Niti Aayog. The Aayog planned to come out with 3 documents: 3-year action agenda, 7-year medium-term strategy paper, 15-year vision document. So 3 things you can see here: 3-year action agenda, 7-year medium-term strategy paper, 15-year vision document. तो ये तीनटा मन को तो आगु जो 5 year plan रहउतला प्लानिंग प्रोसेस एटा रिप्लेस करके हम फास्ट कोन कोलु गोटे तो फास्ट वाला विजन डॉक्यूमेंट जोटा कि 15 वर्ष रो कि 15 वर्ष भीतर हम एतिके नहीं पहुंचबो आ ता पय गोटे मीडियम टर्म स्ट्रेटजी रहला जोटा कि 7 year मीडियम टर्म स्ट्रेटजी, 5 year vision, 7 year medium term strategy and 3 year action agenda हैला. So like that they have started. Team India Hub हमने देख ले like interface between states and the center. Knowledge and Innovation Hub is the think tank acumen. Then I plan, okay. Now coming to question number 87. The chairman of Zonal Council in India. So Zonal Council जो अच्छी तारो chairman of Zonal Council तारो के chairman थांती. So answer is Union Home Minister. Union Home Minister is the जे भी तुम रहिबे से ex officio कौन is chairperson. और जो vice chairperson थांती से जोन रो से माने actually rotate करथांती सेठी जो थांती chief minister मान को भितरे. So Zonal Council कोन देखि देबा. The Zonal Council are a statutory and not constitutional bodies. They are not constitutional. They are they are not constitutional. They are statutory bodies established by an act of parliament, that is State Reorganization Act. तो जानती हो जो State Reorganization Act ला 1956 रे 14टा state and 6टा UT आस्तला से टाइम रे divide सब को change करगी. So से तापर actually because new states हेतिला तो तांको भितरे proper cooperation होया पई Zonal Council को establish कराइतला हैला. आ गोटे भी अच्छी actually your interstate council, so that is different, this is different हैला. So interstate council रे हमर पहले prime minister ताको हेड करंती, बाकी दिस इज जनरल काउंसिल जाब हेड पर्सन की यूनियन होम मिनिस्टर. तो केतरा जन अछि ए स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट अनुसार नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड गोटे सेंट्रल भी रहउछि. ओके, सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड सेंट्रल. सो आ सेथिकारे अलग अलग माने जति कि से तांको सब जने किछि किछि स्टेट्स अछंती सेथिकार. नाउ व्हाइल फॉर्मिंग दिस जोन्स several factors have been taken into account, that is the natural divisions of the country, the river systems, means of communication. Suppose Madras to tomar baharla your Andhra Pradesh and your Karnataka and all Madras to thila Madras state to sei pai tankoro tanko bhitere gote zone jo jode ki southern zone hela hela and kichi dhara natural frontier tanko bhitere nahi, river same river upre like independent he rohuchanti. Now jodi cultural and linguistic affinity thiwa, suppose in Telangana Andhra Pradesh you can say requirements of economic development, security, law and order. So iso drushti re zonal council heichi and to promote interstate cooperation वगैरह, right, जोड़ा interstate council बचा. अच्छा मतलब कोई interstate council को article में provide है. Constitution में which article tells about interstate council and interstate river dispute? Okay, tell me in the comment section regarding these two questions. Okay, interstate river dispute by co article, interstate council by co article. Constitutional bodies. This is zonal council is your statutory body. So there are 5 zonal councils under the State Reorganization Act. North Zonal Council, the North के रहले तले North रे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर,
पंजाब एवं लद्दाख लिखि दवा कथा राजस्थान एनसीटी ऑफ दिल्ली यूटी ऑफ चंडीगढ़ सेंट्रल जनरल काउंसिल छत्तीसगढ़ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ओके ईस्ट रहिला तमरो बिहार झारखंड ओडिशा वेस्ट बंगाल हैला एंड वेस्ट रहिला यार गोवा गुजरात महाराष्ट्र यूटी ऑफ दामन दिव दादरा नगर हवेली साउदर्न जनरल काउंसिल आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका केरला तमिलनाडु यूटी ऑफ पुदुचेरी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट पई गुटे अलगा हितला अंडर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट हैला तो नॉर्थ ईस्ट पई आगुर किछि काउंसिल नथिला जनरल काउंसिल तो परे हैला 1972 रे अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट सेतरे असले तमर आसाम एंड तमर सेवन सिस्टर्स आउ योर वन ब्रदर ये सिक्किम हैला त्रिपुरा मिजोरम मेघालय सिक्किम एंड नागालैंड they are not included in the general council and their special programs are looked after by the north eastern council so set up also north eastern council set up under the north eastern council act 1972 now their composition ke thandi chairperson ne dekhle chairperson is the union home minister the union home minister is the chairperson of the each general council vice chairperson ke rahiba chief minister of the states included in each zone act as the vice chairman of the general council for that zone by rotation each holding office for a period of 1 year at a time member ke rahiba chief minister and two other ministers remember this so members of the general council will be chief minister and two other ministers as nominated by the governor from each of the states हैला तो ताकि नॉमिनेट के करछनी गवर्नर करछनी प्रति स्टेट रो दो जन मिनिस्टर को two members from the UT included in the zone and two members from union territories included in the zone advisors one person nominated by the planning commission which has been replaced by Niti Aayog as of now is now okay and for each of the general councils chief secretaries and another officer or development commissioner nominated by each state including in the zone union minister are also invited to participate in the meetings of general councils so it's saying union minister be invited hita hai to participate depending upon the necessity the main objective of setting up general council are to bringing out national integration arresting the growth of acute state consciousness in the कहली state division आइतला से टाइम एटा आस्थिला हैला स्टेट कॉन्शियसनेस रीजनलिज्म लिंग्विज्म पार्टिकुलरिस्टिक टेंडेंसी ताकू कमेया पई देन एनेबलिंग द सेंटर एंड द स्टेट्स टू कोऑपरेट एंड एक्सचेंज आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस हैला एनेबलिंग द सेंटर एंड द स्टेट्स टू कोऑपरेट एंड एक्सचेंज आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस देन एस्टैब्लिशिंग अ क्लाइमेट ऑफ कोऑपरेशन अमंग द स्टेट्स फॉर सक्सेसफुल एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 88 तो 88 क्वेश्चन कोन कहूची फॉर ईच कंट्री ग्लोबल हंगर index values are determined by which of the following indicators so undernourishment child mortality child stunting child wasting these are the options so correct answer is all of the above answer D okay तो ये टर्म डा सब विषय जानितो दरकार अंडरनरिशमेंट कोन जते नरिशमेंट बहुत कम थाय रिक्वायर्ड अमाउंट रो तमरो न्यूट्रिशन मिलेनी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड ऑल अंडरनरिशमेंट को आजो चाइल्ड मोर्टालिटी जते तमरो बिलो लाइक 5 वर्ष तळे जदी मरि जाउथो ताको चाइल्ड मोर्टालिटी को जाय चिल्ड्रन्स माने अदली बिलो 1 ईयर मरथो ताको इन्फेंट मोर्टालिटी भी को जाय राइट आ गोटे मैटरनल मोर्टालिटी भी अछि जो प्रेग्नेंट वुमन एंड आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड जदी ताको डेथ होता है दैट इज मैटरनल मोर्टालिटी चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग these are two terms very important तो चाइल्ड स्टंट माने ताको एक्चुअली हाइट कम थिवो हैला ताको एज अनुसार हाइट कम थिवो एंड चाइल्ड वेस्टिंग माने ताको हाइट अनुसार वेट कम थिवो ओके दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग सो चाइल्ड स्टंटिंग स्टंटेड ग्रोथ माने हाइट कम हैला एज अनुसार हाइट कम वेस्ट माने कोन चाइल्ड वेस्टिंग माने लाइक हाइट अनुसार तमरो वेट कम ओके सो इंडिया हैज स्लिप्ड टू 101st पोजीशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 रे इंडिया रा पोजीशन ला 101 के आउट ऑफ 116 कंट्रीज दैट इज इट इज एक्चुअली डिक्रीज्ड 2020 रे हमरो रैंक ला 94th तो 94th रो इंडिया रो रैंक डिक्रीज है कि 101 हे जायछि आउट ऑफ 116 कंट्रीज कोथरे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रे ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज के करे वेरी इंपोर्टेंट जॉइंटली पब्लिश्ड बाय एनजीओ ग्रुप्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड को रिलीज करंती है रिमेंबर दिस थिंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ दे रिलीज करंती गोटे एक्चुअली जर्मन रो एनजीओ आ गोटे मत मन पड़नी सो दी बोथ आर एनजीओ ग्रुप्स यूरोपियन एनजीओ ग्रुप्स ओके so remember this global hunger index 101st rank India ro out of 116 countries and last year 94 thila so we have decreased our rank and release ke kore report global hunger index to concern worldwide and wealth hunger life and a report first time release kebe 2006 re and every year release हुए October masya re and 2021 edition it hala 16th edition 2006 ru 21
हिसाब कर देखि 4 10 14 15 होची 16 whatever. Okay, let's see. Next, okay, some detailed analysis, detailed information about this report. So aim of this report to global hunger index is to comprehensively measure and track hunger at the global, regional, country levels. So global, regional, country level re to comprehensively measure and track hunger. Now calculation. Kemti calculation aman korchonti? So it is calculated on the basis of 4 indicators. 4 indicator nochonti, that is undernourishment. Today question e pachartila, that is share of the population with insufficient calorie intake. Child wasting kemti mu koithli? Share of children under age 5 who have low weight for their height. So height also जदि weight कम थिबो हला, reflecting acute undernutrition, child wasting the कहउची. Then child stunting, share of children under age 5 who have low height for their age. So age अनुसार जदि height कम थिबो, reflecting chronic undernutrition, तो child stunting कहउची हला. कोन कहे child stunting. Then child mortality, the mortality rate of children under the age of 5. So these are the 4 indicators which are taken into account by the World Hunger Life and the Concern Worldwide for the Global Hunger Index report. So based on the values of the 4 indicators, the GHI determines hunger on a 100-point scale, where 0 is the best possible score, that is no hunger, and 100 is the worst. So each country's GHI score is classified by severity from low to extremely alarming. Data collection, undernourishment data are provided by the, so undernourishment data ke FAO, Food and Agriculture Organization, जोटा कि गोटे UN specialized organization. अच्छा मतलब कोई परियो FAO रो headquarter कोड अछि, चलो मैं बता देता हूँ, रोम इटली. ओके, सो एक्चुअली जति की इंटरनेशनल सॉरी UN रो स्पेशलाइज्ड बॉडी अछि, तारो काम कोन और ता हेडक्वार्टर कोड कोन मन रखा दरकार, या पर मोटे वीडियोस बनै छी, यू कैन सर्च इन माय चैनल ओनली. ओके, UN दीटा वीडियो अछि, गोटे UN रो like different bodies ऊपर, UN रो जो permanent bodies and UN रो specialized agencies ऊपर. Okay, so you can go through that video as well. Now FAO रो जो रिपोर्ट और चाइल्ड मोर्टालिटी डाटा से माने, अच्छा अंडरनरिशमेंट जो 4टा इंडिकेटर रो अंडरनरिशमेंट डाटा आले FAO रो, चाइल्ड मोर्टालिटी डाटा, चाइल्ड मोर्टालिटी जो 4 नंबर पॉइंट सेटा आसला कोडू UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन, UNIGME. So UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन. Now child wasting and stunting data कोड आनचोंती UNICEF रो आछोंती and the WHO and World Bank. UNICEF, WHO and World Bank रो आनले child wasting stunting data, and UNIGME inter agency group for child mortality estimation रो आनले कोन child mortality data, then FAO रो आनले undernourishment data. Okay, so this is now government of India stand कोन, government of India जो Ministry of Women and Child Development, Ministry of Women and Child Development. अच्छा, currently who is the Union Minister for Women, Ministry of Women and Child Development? In the comment section कहबो. Okay, so Ministry of Women and Child Development has criticized the report, claiming that the methodology used by FAO is unscientific. Why? So according to the government, the Global Hunger Index report 2021, like 16th report, and FAO report, FAO जो कि undernourishment data दोची on the state of food security and nutrition in the world 2021. The report ना कौन ला? The state of food security and nutrition in the world have completely ignored the following facts. Which facts? They have based their assessment on the result of 4 question opinion poll. So ଗୋଟେ opinion poll लेले जे की conduct करतला, conducted telephonically by Gallup International. So Gallup is a like you can say consultancy or NGO जे की ଗୋଟେ opinion poll नेतला. तो सही basis मान करचली दोडा की इंडिया की 4टा क्वेश्चन तुम केमति जानि गलो. Then the scientific measurement of undernourishment would require measurement of weight and height. So scientific केमति तुम जतले measure करियो statistically, then जाकी proper आना पड़ियो. Whereas the methodology involved here is based on Gallup poll. Gallup poll गोटे telephonic poll करके तुम्हें पचार देलो, गोटे opinion नहीं गलो, तो सही अनुसार तुम केमति कर पा, जोटा कि only purely telephonic estimation होचे, that is not scientific. That's why Indian government is opposing this thing. Then the report completely disregards government's massive effort to ensure food security to the entire population during the COVID period is under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, then Atmanirbhar Bharat scheme and all. Then some relative initiatives by India. Eat Right India movement. So basically India is saying that we are taking all these steps. Then how tome kemiti mane tome kocho ki amara still our rank decrease kori chalchi. Your data collection is not scientific, jodi telephonic call korcho. So India kon step nechi Eat Right India movement, jodi ki FSSAI, Food Safety and Standards Authority of India under the Ministry of Health and Family Welfare. So seta under eta achi FSSAI. So they are campaigning for Eat Right India movement. So an outreach activity organized by FSSAI for netizens to nudge them towards eating right. Poshan Abhiyan launched by Minister of Women and Child Development in 2018.
It targets to reduce stunting, undernutrition, anemia among young children, women, and adolescent girls. So, say by tomorrow, even Pradhan Matru Bandhan Yojana is there. Here it is written. A centrally sponsored scheme executed by the say Ministry of Women and Child Development. Pradhan Mantri Matru Bandhan Yojana. जेथे कि मैटरनिटी बेनिफिट दिया होची बेसिकली जे माने टैक्स दियंतिनी हैला नॉन टैक्स वुमेन मान को से मान को बेसिकली किछि बेनिफिट दिया होची लाइक 6000 रुपीस दे आर गेटिंग बेनिफिट्स along with free checkup and other things. Okay, so implemented in all districts country from with effect from 1st January 2017. Next, food fortification. We are planning to fortify the foods given under the midday meal and other things. So food fortification or food enrichment is the addition of key vitamins and minerals such as iron, iodine, with your zinc, vitamin A and D to staple food such as rice, milk, and salt to improve their nutrition. जैसे हमें iodized salt मैं समझता है को ना, तो salt रे iodine नहीं था, बाकी iodine because iodine is needed, then because तुम्हारे जो कौन thyroid वगैरह problem पाई, so salt रे iodine वगैरह में से क्या दो चंगी, सेवला basically कोटे there is something called golden rice, जो कि vitamin A मिसा ही की दवारा पाई planning थला, but that was planning to be implemented. That is called food fortification. National Food Security Act 2013, it legally entitled up to 75% of the rural population and 50% of the urban population. NFSA National Food Security Act under 75% of rural and 50% of urban population to receive subsidized food grains. So, under the targeted public distribution system, PDS, targeted public distribution system. Mission Indradhanush, it targets children under 2 years of age. So Mission Indradhanush, so it targeting children under 2 years of age and pregnant women for what? Immunization against 12 vaccine preventable diseases. So what are these 12 vaccine preventable diseases? तुम्हें मत है comment section में वही बो Mission Indradhanush. There is another Mission Indradhanush that is for your bank recapitalization. Okay, that is also Indradhanush. Then ICDS, Integrated Child Development Services. Launched on 2nd October 1975. The ICDS scheme offers a package of 6 services: supplementary nutrition, preschool, non-formal education, nutrition and health education, immunization, health checkup and referral services to children in the age group of 0 to 6 years, pregnant women and lactating mothers. Now coming to question number 89, the reserve held by commercial banks over and above the statutory minimum with the RBI are called, answer is excess reserve. तो मैं जानती हूँ बैंक्स मान को सब कमर्शियल बैंक हो शेड्यूल बैंक से मान को कौन बेसिकली आरबीआई पाखरे किछि रखिया पड़े मानी और तांकर जति की अछि बेसिकली मनी सप्लाई नॉट मनी सप्लाई तो कौन कह जाए बेसिकली यस जति की मानी तो सपोज 100 टका आसला बैंक को सानको सेट्रो किछि जिंसो सब से माने लोन दे पारिबेनी किछि जिंसो तांको कैश रखिया पड़ो से पे ना कह जाए सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जोटा कि अराउंड 4% थाई कोविड टाइम में ताको 3% कर देखले सो सेट्रे तांको किछि फायदा होय नै. So बाकी रो भी समान किछि एसएलआर रे रखंती स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो. Okay, I had mentioned here. You can see here cash reserve ratio CRR is the amount of liquid cash that banks have to maintain with the RBI. तो बैंक मान को कोन RBI पाखरे किछि कैश रिजर्व रखिया पड़ियो आ कहै छै कैश रिजर्व रेशियो एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट. तो ताको बैंक में जते डिपॉजिट हैला इन डिटेल कोन नेट टोटल सॉरी नेट NTDL नेट टोटल नेट टाइम डिपॉजिट ऐसा कौन गोटे लिखली मने पड़ता है एग्जैक्ट फोटो ना कोन सो दैट डिपॉजिट होय नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट एंड कोन गोटे. ओके, तो तार जति तार किछि परसेंटेज तो बेसिकली लिक्विड कैश रखिए पड़ो बैंक वन रखिए कोडी आरबीआई पाखरे ता खोजे कैश रिजर्व रेशियो. तो ए जो अमाउंट हैला एटा आइडल पड़ी रहला. सो 100 टका सुपर 3 टका 4 टका जो अछि इंटरेस्ट रेट रे बेसिकली ऐसा परसेंटेज तो दैट हैज से अथिरे बैंक वन को किछि फायदा हबो नाही. बाकी किछि रहयो एसएलआर जोटा कि अराउंड 16 to 18% में चले. So under SLR statutory liquidity ratio, commercial banks are mandated by RBI to maintain a stipulated proportion of their deposit in the form of liquid assets like cash, gold and unencumbered free from debt securities. बाकी एटा तमरा लिक्विड न रखी कि तुमे गोल्ड रखि परियो गोल्ड रेट बडे तुमको फायदा हबो तुमे रखि परियो लाइक गवर्नमेंट जीसैक जो कहते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से भी किछ इंटरेस्ट मिल जाए. तो एसएलआर रे यू विल गेट सम बेनिफिट. ओके, बट सीआरआर रे द बैंक्स विल नॉट गेट एनी बेनिफिट. दस कहूँ कि सीआरआर एसएलआर छोड़ा एतिक तो मैंडेटेड ता छोड़ा भी तुम जदी किछ रखिया चाहूचो ता को आजो एक्सेस रिजर्व. सो द रिजर्व हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स ओवर एंड अबव द स्टैट्यूटरी मिनिमम विद द आरबीआई इज कॉल्ड एक्सेस रिजर्व. So excess reserves are capital reserves held by a bank or financial institution
in excess of what is required by regulators, creditors, and internal controls. Okay, so kichi important joda statement like terms economics ra ase, so we'll study that. Marginal standing facility. Okay, so marginal standing facility is a window for scheduled banks. So scheduled bank क्या कहा जाए? Actually RBI तमे जानथि RBI established हेतला 1935 रे under the RBI Act 1934. So सेइतरे तारो गोटे सेकंड शेड्यूल अछि, सेइतरे किछि बैंक्स को नाम मेंशन अछि, तो सेमान कहा जाउछि scheduled banks. Okay, तो commercial banks can be scheduled, can be non scheduled. Okay, so MSF kono ko man ko pai khali available scheduled bank pai to borrow overnight from the RBI in an emergency situation when interbank liquidity dries up completely. Hala interbank liquidity kono tara कहउछि call money. So under interbank lending or call money, banks lend funds to one another for a specified term, generally 14 days. Hala for a specified term, जोटा कि 1 day भी था 14, actually overnight एटा call money कहा जाए. hala जदि call money absent अछि तमे MSF भी नै परिबो. So banks borrow from the RBI by pledging government securities at a rate higher than the repo rate under the liquidity adjustment facility. So गोटे जिंस अछि जोटा कहउछि LF कहउछि, that is called liquidity adjustment facility. जो अनुसार RBI कोन करो रेपो रेट अनुसार गोटे तुमको लोन दिए बैंक मान को. रेपो रेट माने कोन रीपर्चेज एग्रीमेंट गोटे थाए. रेपो मींस रीपर्चेज एग्रीमेंट. सो हेतरे कोन हुए बैंक माने कोन करछंती RBI टू किछि टंका नउचंती आ ता बदले किछि लाइक तांकर जो अछि गवर्नमेंट सिक्युरिटीज ताको बंधा रखुचंती. ना समान गोटे एग्रीमेंट लिखुचंती कि आमे एटा को ए इंटरेस्ट दे कि वापस एटा को नै जीवो. ओके, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट. और देयर इज समथिंग कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, जो कि कोन करे RBI बेसिकली पैसा आने बैंक्स मान को पाखरु जतले मनी सप्लाई टा बहुत अधिक आ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, जतले मनी सप्लाई को कमेया पई RBI सेटा को कोन करे रिवर्स रेपो को बेसिकली कोन करे रिवर्स रेपो रे बढ़े देकी बैंक मान को पैसा आने. ओके, सो रेपो रेट तो से कहउछि कि रेपो रेट बोथ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को कहा जाए बेसिकली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. हला टर्म मन रखि चेष्टा करो. रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सो बोथ आर कॉल्ड एज लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी. और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज डिफरेंट. जतले तुमे कॉल मनी बा अंडर LF एथरे जने आनी पारनो तुमे MSF द्वारा आनी परियो. की आनी परियो? नॉट ऑल बैंक्स, ओनली शेड्यूल्ड बैंक्स. सो रेपो रेट इज एक्चुअली रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच द RBI lends money to commercial banks. ओके, RBI जो रेपो रेट रे कि समस्त सब कमर्शियल बैंक आनी परिवे, both scheduled and non scheduled. But MSF जो marginal standing facility only which bank? Scheduled bank can bring. So RBI lends money to commercial banks against the securities in the event of any shortfall of funds. Now, loans provided at repo rate are provided for a specified period with an obligation that the bank will repurchase the securities back at a predetermined rate. Now, repo rate से कौन करछंती टंका नउचंती, टंका जो रखिचंती कोन किछि बंधा कि सामान गोटे एग्रीमेंट लिखिचंती कि ना हमें इको परचेज करबा, रीपर्चेज. दैट्स व्हाई रेपो रेट. द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड MSF. So जेमति कहली रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच RBI lends money to commercial banks, while MSF is the rate at which RBI lends money to scheduled banks. Scheduled जेमति कहली कि RBI Act रो सेकंड शेड्यूल रे मेंशन अछि banks. So that's why they are called scheduled banks. Now the repo rate is given to banks that are looking to meet their short term financial needs, while MSF is meant for lending overnight to banks. Okay, so this short term can be more days in number, but this is overnight. Now lending at repo rates involves so this 14 days जो लिखी जेटा को आउटसाइड चेक कर दो, maybe for 1 day. So this I have to check. So call money and MSF जो दियंती short term जो लिखी for exactly how many days. Now lending at repo rates involves a repurchase agreement. That's why they are called repo, while it is not so in MSF. The marginal standing facility रे भी तमे किछि लाइक रखिबो तमरो कोन डेट रे जो तुम आनिबो जो पैसा आनिबो बैंक मान जो पैसा आनिबो RBI टू से माने भी किछि रखिबे तमरो कोन सिक्युरिटीज. Now they are not mandated to brought back their securities in case they could not pay these things, so that से जो ସେମାନେ जदि पे करन पारिबे basically RBI can keep those securities. Now under MSF, banks are also allowed to use securities that come under statutory liquidity ratio. Now जेमति कि हम कहथली कि बेसिकली तमरो CR and SLR are mandatory, तो बेसिकली ओवरनाइट सपोज बैंक को किछि पैसा दरकार से SLR रो भी SLR अंडर रे कोन हम पढिथलु कि कैश रखि परिबो, गोल्ड रखि परिबो, चीसेक भी रखि परिबो, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज. ना सपोज गवर्नमेंट सिक्युरिटीज आपन नाही, सो SLR अंडर जो चीसेक अछि ताकू भी रखि परिबो. दैट्स व्हाई MSF रो जो बेसिकली इंटरेस्ट रेट था सेटा जनरली रेपो रेट रो अधिका थाय. ओके, नाउ सम की टर्म्स. then we have पढिलु शेड्यूल्ड बैंक्स.
A scheduled bank is which one? Any bank which is listed in the second schedule of RBI Act 1934 is considered a scheduled bank. The bank included in this category should fulfill two conditions. So the condition 1934 is the paid up capital and collected fund of the bank should not be less than 5 lakh rupees. So same time जो थिला तांकर सेटल थिला कोन कि paid up capital and collected fund of the bank should not be less than 5 lakh rupees. Any activity of the bank shall not be adversely affect the interest of the depositors. So they are এই তিনটা যদি কন্ডিশন ফুলফিল করতে হয় তাহলে সেকেন্ড শিডিউল রখা হয়েছিল, দ্যাটস হোয়াই দে আর কল্ড শিডিউলড ব্যাংকস. Commercial banks, it refers to both scheduled and non-scheduled commercial banks which are regulated under the Banking Regulation Act 1949. Now commercial bank का क्या होची कि both scheduled and non-scheduled commercial banks which are regulated को under regulate करा होची Banking Regulation Act 1949 ताको regulate करची. Liquidity adjustment facility is a tool used in monetary policy by the RBI that allows banks to borrow money through repurchase agreements. So repurchase agreements को repos कहा होची, and for banks to make loans to the RBI through reverse repo agreement. Now सबले जो या विषय तो मैं अंडरस्टैंड करना बहुत दरकार. Reverse repo भी देखि देबा. Reverse repo जल्दी कहछि कि at which RBI borrows money from the commercial banks within the country. Now repo and reverse repo को सेमाने सबले जो RBI कोन करे और जो monetary policy जो थाए मीटिंग हुए monetary policy committee सेमाने ताको ऊपर तळ करथांती. बेसिकली RBI गोटे monetary policy जो monetary policy को मेंटेन करे पई ताको दिया हिची गोटे 2016 टू सेमाने सेटा करछंती काम करछंती. RBI रे अमेंडमेंट करा हिची. तो सेमाने रेपो एंड रिवर्स रेपो को बड़ ऊपर तळ करके कोन करंती मनी सप्लाई को कंट्रोल करंती. तुम जानछो जेतले मनी सप्लाई मार्केट रे बेसी हिजिवो आ प्रोडक्ट से अनुसार बेसिकली नथिवो सप्लाई मनी सप्लाई तो थिवो किंतु तो गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट इंक्रीज्ड तो कोन हबो बेसिकली प्राइस बढ़िवो. ओके सो दिस इज तो सेट कोन करे मनी सप्लाई कोन करे अपने कोन करिवे बेसिकली रेपो रेट को रिवर्स रेपो रेट को जो तार इंटरेस्ट रेट को बढ़े देबे. तो इंटरेस्ट रेट बढ़े देबे तो बैंक पाखर बेसी पैसा कमी जीवो हैला. तो से अनुसार से माने बेसी पैसा आनी परिबे नाही. तो मनी सप्लाई कमी जीवो आ जतले से बेले इन्फ्लेशन जतले माने कोन रेट जतले बढ़ी जाय मनी सप्लाई कमी जाय से बेले रेपो रेट को कमे देबे तो मनी सप्लाई कोन अधिक आइ जीवो. सो दिस इज द थिंग. Now coming to the last question of the current video, question number 90. Which of the following promoted the concept of self-help groups for financing the poor? So कोची ए भितरु किए माने सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंस करिया पई promoted करथिला the concept of self help groups for financing the poor. So answer is NABARD. Now let's see something about NABARD. So NABARD is a developmental bank focusing primarily on the rural sector of the country. It is the apex banking institution to provide finance for agriculture and rural development. It's saying it is the apex banking institution to provide finance for agriculture and rural development. Its headquarters is located in Mumbai, the country's financial capital. It is responsible for the development of the small industries, cottage industries, and any other such village or rural projects. Now, NABARD is a development bank focusing primarily on the rural sector of the country. So mainly rural sector को focus करिया पे basically NABARD हितला गोटे development bank. It is the apex banking institution. It is the apex banking institution to provide finance for agriculture and rural development. Okay. Next. So basically कुछ NABARD गोटे banking institution जे कि कोन directly basically NABARD का को loan देनी consumer को. They refinance some banks like RRB, regional rural banks and cooperative banks. Then they provide loans for agriculture and rural development purpose. Headquarter कोडी यार मुंबई रे. Now responsible for development of small industries, cottage industries, वगैरह मतलब any other such village and rural projects. It is our statutory body 1982 established in the under which act Parliamentary Act National Bank for Agriculture and Rural Development Act 1981 as per the Sri B Sivaraman committee's report. So Sri B Sivaraman 1979 ने गोटे report देथिले जहां सारे 1981 ने गोटे act आस्ला established like 1982 रे NABARD हला. Remember this B Sivaraman committee. Now its initial paid up capital was 100 crore contributed with 50:50. So 50% देथिला के Government of India and 50% के देथिला Reserve Bank of India. The functions of the three institutions of RBI जो तीनटा फंक्शन थिला ताको नेशनल NABARD कोन द एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, एंड थर्ड हला एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर ट्रांसफर टू NABARD. नो एससीडी कोन एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट. RBI provided through its SCD short term refinance to cooperatives. So SCD hela RBI provided through its SCD, that is Agricultural Credit Department, short term refinance to cooperatives.
कोऑपरेटिव मान को शॉर्ट टर्म रिफाइनेंस के कला एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट करूला हला नेक्स्ट आरपीसीसी दैट इज रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल ये कौन करथला रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल रीजनल रूरल बैंक को डील करथला 1979 टू नेक्स्ट तो कोऑपरेटिव को के करथला रिफाइनेंस एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट रीजनल रूरल को के करथला आरपीसीसी रीजनल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल एआरडीसी कोन agriculture refinance and development corporation that is RBI set up the agriculture refinance corporation ARC in 1963 to work as a refinancing agency in providing medium term and long term agricultural credit to support investment credit needs for agriculture development 1975 re ARC was renamed as agriculture refinance and development corporation to give focused attention to credit offtake वगैरह तो ये तीनटा को काम को बेसिकली कोन हला ICD RPCC and ARDC ये तीनटा को RBI टू केने गला नाबार्ड ने गला now NABARD and RBI ভিতরে কোন রিলেশন আছে যেমন আমরা দেখলে কি NABARD তো বেসিক্যালি 50% বি বেসিক্যালি को कैपिटलाइज করছি RBI করছি NABARD को RBI and government of India মিশিকি so RBI is the central bank of the country with sole right to regulate the banking industry and supervise the various institution banks that also include NABARD so NABARD को भी কি রেগুলেট করছে RBI under the banking regulation act of 1949 so many developmental and regulatory works are done by RBI and NABARD in cooperation RBI provides 3 directors to NABARD's board of directors तो NABARD जो board of directors से through RBI भी तीन को provide करची NABARD provides recommendation to RBI on issues of license to cooperative banks opening of new branches of state cooperative banks and regional rural banks so RRB and cooperative banks को like NABARD and RBI दोनों control करचोंती NABARD's affairs are governed by a board of directors the board of directors are appointed by the government of India in consonance with NABARD act okay now there are some more extra information financial contribution refinance short term loans so crop loans are extended to farmers for crop reduction by financial institutions jaako ki NABARD se refinance kore long term loans like your credit to financial institution for to provide gamut of activities encompassing farm and non-farm activity with a tenures of 18 months to more than 5 years rural infrastructure development fund this is important rural infrastructure development fund NABARD established होतला केबे 1995 रे and NABARD itself was established in 1982 so NABARD rural infrastructure development fund गोटे सेटअप करथला हला for the shortfall in lending to priority sector by schedule तो priority sector lending गोटे थाय जानथियो तमे commercial bank माने ताको दियंती तो ताको रिफाइनेंस करिया पई rural infrastructure development fund भी बनैतला के NABARD केबे 1995 रे then NABARD infrastructure development assistant NIDA NABARD infrastructure development assistance it has been designated to complement RIDF. Now, long-term irrigation fund (LTIF). The LTIF in NABARD was set up with an initial purpose of 20,000 crore for funding 99 irrigation projects during 2016 to 17. Pradhan Mantri Awas Yojana को भी ये refinance करची. Oh, there are some more also. Warehouse Infrastructure Fund. Union government credited warehouse infrastructure in the year 2013-14 with NABARD with the purpose of वगैरह वगैरह बहुत सारा अच्छी. Now, Producer Organization Development Fund. जब भी वो पढ़ले हमें कौन rural infrastructure development fund से बड़ा producer organizations development fund भी अच्छी so हम देख रहे हैं producer organization कौन NABARD set up producer organization development fund with initial purpose of 50 crore to support and finance producer organizations and primary agricultural credit societies so remember these two things producer organizations and primary agriculture credit society now कौन producer organization कौन it is a legal entity producer organization is a legal entity formed by primary producers जैसे कि farmer milk producer, fisherman, weaver, rural artisan, craftsman. The producer organization can be a producer company, a cooperative society, or any other legal form which provides for sharing of profit or benefit among the members. So it is like a small cooperative society. जो primary producers होचंदी. Primary agricultural credit society. It is the basic unit and smallest cooperative credit institution in India. Primary agricultural credit society. It works on grassroots level. So credit दिया है ना ग्राम पंचायत and village level it provides credit to farmers in the form of term loans and recovers the amount after harvesting of crop from the cultivator. So self help group type रो ही एटा जिनस होता है. Okay, so this is it. So we'll stop here. So there are two more parts to be made for completing the series. Okay, and recently I had changed the name of my channel. So initially it was OPSC exam revise with me. So I had changed it to I had put my name Suraj. Okay, so you can join my Telegram channel also for getting the PDF. Already I had shared the PDF. This is the
Okay, sorry. There is some problem in my keyboard. Okay, you can see here. This is the channel OPSC Exam Revise with Suraj. Okay, so please join, and you can ask your queries in Telegram as well as in the comment section in the YouTube. So we'll stop here. Thank you so much. Hare Krishna, Jai Jagannath.